तो ब्लड प्यूरिफाई कोठी ये यार फंक्शनल यूनिट कौन बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन नेफ्रॉन ओके सो ये नेफ्रॉन एठी थिबो ए यारी भितरे ये प्यूरिफाई करियो ब्लड आसीबो एठी को ब्लड आसी की ब्लड प्यूरिफाई है कि बॉडी को पड़े जो प्यूरिफाइड ब्लड एवं तार जो मटेरियल गुडा बंची थिबो ताको यूरिन थ्रो रे पानी थ्रो रे पड़े so this is nephron ये फंक्शन एई भलिया हुए ब्लड आसिला ब्लड पसिला परे प्यूरिफाई कला ए बाउमेन कैप्सूल थ्रो रे ये तार बाउमेन कैप्सूल अछि गोटेला एफरेंट आर्टेरियल गोटेला इफरेंट आर्टेरियल बेसिकली कोन जो थिरे किडनी एफरेंट माने कोन ब्लड टा किडनी भीतर को आसिला एफरेंट माने जोटा कि ब्लड टा एवे फ्रॉम द रेनल कर्पोजुल्स टू नहीं गला जोटा कि किडनी भीतर नहीं गला so the blood flowing is rich in the waste product side kaina already blood टा बॉडी रु किडनी को आसुची किडनी रु जोटा जीवो एटा वेस्ट प्रोडक्ट रहिबनी so kidney रो फंक्शन कोन खाली जानि था रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल pressure excretion of metabolic waste and foreign chemicals secretion of hormones like renin secretion ये करे glomerular filtration माने बेसिकली फर्स्ट स्टेप जोटा कि यूरिन फॉर्मेशन रो blood ru यूरिन फॉर्मेशन which is carried out by glomerulus that's why the step is called glomerular filtration kidney filter about 1100 ru 1200 ml of blood per minute which constitute roughly one-fifth of the blood pumped out by the heart. हार्ट रो पर मिनट जते ब्लड रिलीज हुए तार 1/5 ये फिल्टर करे किडनी फिल्टर करे तामने चिंता करे जदि किडनी गोटे फेलियर हे जिवो मनुष्य बंची परिवो एटा जानिछो बट बंची परिवो बट ताकू प्रॉब्लम होबो कोन जदि दीटा किडनी मिसे की तार 1/5 ब्लड को फिल्टर करि पारंती काना हार्ट जो ब्लड आसे ताको फिल्टर करला परे ही बॉडी को डिफरेंट पार्ट को जीवो प्योर ब्लड डिफरेंट पार्ट को जीवो so the glomerular capillary blood pressure causes filtration of the blood through three layer gutela endothelium glomerular blood vessel thai epithelium bowel capsule जोंटा कि देन बेसमेंट मेम्ब्रेन ये सब पूरा स्ट्रक्चर कथे ये बेसमेंट हो ये बाउमेन कैप्सूल हो देन एठी प्यूरिफाई हला तीनटा स्टेज कथा कहूची कथा एला एफरेंट आर्टेरियल जी के आसिला आ गोटे इफरेंट की प्योर ब्लड गला so the podocytes mane the epithelial cell of bowel capsule are arranged in such a manner so that as to leave some minutes space between filtration silts or silt spore so ये सब bowel capsule ultra filtration हुए इसी basically and filtrate the called glomerular filter primary urinate formation then urine an adult man normally passes through 1 to 1 liter of urine per day composition of urine basically जानी तो water बेसी थाए and salt 2% urea 2 to 6% and uric acid 0.3% सही तरह creatine थाए creatine थाए and ammonia थाए color थाए pale yellow due to pigment यूरोक्रोम थाए जोटा कि हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन पर प्रोड्यूस हुए यूरोक्रोम सीटा सीट में येलो कलर पीएच केते थाए 4.5 to 8.2 नॉर्मल एवरेज हला 6 slightly acidic unpleasant odor if you allowed to stand impart
strong smell like ammonia. So ଆଉ କିଛି organ ଅଛି ଯୋଉଟା କି lungs ର ବି କାମ ସିଏ air करे excretion कार्बन डाइऑक्साइड निए सॉरी ऑक्सीजन निए कार्बन डाइऑक्साइड छाड़े वाटर मध्य वेस्ट प्रोडक्ट भले ये करे तो ये भी लंग्स लिवर भी देखले decomposition of hemoglobin and worn out RBC into bile pigment formation कर दिया जाती bilirubin and biliverdin basically bile pigment जो हुए this pigment possesses into alimentary canal and the with the bile for elimination of the focal matter so bile through रे bile दिए bile भी digestion में help करे अब bile बाहर को पड़े जाए बॉडी बाहर को so liver भी बढ़िया फंक्शन करे similarly yeah, the liver also excrete cholesterol, steroid hormones, certain vitamins and drug via bile. So liver deaminates the excess and unwanted amino acid जो body रे थाए ताकू ये हटे दिए liver producing ammonia which quickly combined with carbon dioxide to form urea in urea cycle or ornithine cycle which is further removed by kidney. Skin. The sweet and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substance through their secretion. So sweet gland ଅଛି ଜାଣିଛ the secretion of sweet gland that is sweet is an aqueous fluid contains NaCl ଯେମିତି ଲୁଣ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଏନି ତେବେ ଝାଳ ବାହାରିତେ ଦେଖିବ ଲୁଣ ଟାଇପ ହେଇଯାଏ lactic acid small amount of urea amino acid and glucose ଥାଏ control of sweet loss is an example of homeostatic control କୁହାଯାଏ and body temperature regulation ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ sweet ହେଲେ sebaceous gland sebum from the sebaceous gland eliminates sterols fatty acid waxes and hydrocarbons. This secretion is mainly meant for proactive oily covering of the skin. Intestine salivary gland is ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛେ ଦି ଜଣର କିଛି କିଡନୀ ଦେଖିବ ଯୋଉ ୟୁରେମିଆ କଣ it is the presence of excessive amount of urea in the blood. Urea is highly harmful as it poisons the cell at a high concentration and may lead to the kidney failure ହେଇଯାଇପାରେ ୟୁରିଆ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ kidney failure कौन ना renal failure को आ जाए partial or total inability of the kidneys to carry on excretory and salt water regulatory function is called renal or kidney failure. Then renal calculi stone जैसे formation हो जाए less water insoluble masses of crystallized salt थाए जोटा कि कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब जो थाए किडनी रेनाल कैलकुली को आ जाए कहना कैल्शियम बेसी थाए से सो स्टोन जमी जाए किडनी रे कहतनी किडनी ऑपरेशन से हुए सो एक्सेसिव वाटर बेसिकली पियो जी वाटर बहुत कम पिए तार किडनी स्टोर होबार बेसी अछि चांसेस अछि then glomerulonephritis it is the inflammation of glomeruli of the kidney artificial kidney hemodialyzer is a machine that is used to filter the blood to remove the urea and other nitrogen waste of a person whose kidney or damage jar kidney damage ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ hemodialysis କରାଯାଏ ତାର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ या फिल्ट्रेशन କରି ପାରିନି ତ ସେଇ केसेस ରେ ଏଟା କରାଯାଏ so next ଦେଖିବା ଆମର କଣ ନା human skeleton total human body made up of କେତେ ଅଛି ନା 127 170 bone जोटा कि फ्यूज ହେଇକି सॉरी 270 बोन ସେଇଥିରେ फ्यूज ହେଇକି 206 बोन्स ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ 212 टोटल एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स था एपेंडिकुलर स्केलेटन जोटा कि साइड वाला 126 बोन which include pectoral and pelvic girdles bone are four category according to size and shape long short flat and irregular smallest bone is steps कान कोठी थाए ear रे longest and strongest bone is femur गुड़ थाई थाई funny bone
is olecranon processes on the top of the ulna, radius and ulna. There are remarkable difference in the skull of male and female. Thus, together with pelvis, it is used for identification of sex. ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଉ pelvis ଥାଇ ଯୋଉ pelvic part ଥାଇ ପାର୍ଟଟା ନର୍ମାଲି ଜଣା ପଡିଯାଏ male female. Spot basically ଦୁଇଟା ସେଲ୍ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରାନିଆଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଫେସିଆଲ. Around 22 ବୋନ୍ ଥାଏ. ସେଇଥିରେ ମିଡିଲ ଏୟାର ର 6ଟା ହାଇଡ୍ ବୋନ୍ 1 and include the bone of the skull. ଏଇଭଳିଆ parietal, frontal lobe, temporal lobe, occipital, condyle. One of the scholar as follows. Cranium basically 8 ଥାଏ. ଏତେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି. ଏଇଭଳି ଆମର ଥାଏ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସିସ୍ सर्वाइकल ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁହନ୍ତିନି ଏଇଭଳିଆ thoracic lumbar fifth lumbar ये सब ଥାଏ pelvic ଏଇଟା. ରିବ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ଟୋଟାଲ 24 ବୋନ୍ ଅଛି ରିବ୍ସ ରେ ଏଗୁଡ଼ା ରିବ୍ସ ଗୁଡ଼ା. ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟେର୍ନମ୍ ମଝିଟା 12 ପେୟାର 12ଟା ପେୟାର ଆଉ 24 ଟୋଟାଲ. ସେଥିପାଇଁ ବାଇସେଫାଲିକ୍ କୁହାଯାଏ. ଇଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମରସ୍ ଉପରଟା ଗୋଡ଼ଟା ତ ସେଇଭଳିଆ ଥାଇର ଏଟାକୁ ଫ୍ୟୁମର କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ ହ୍ୟୁମରସ୍ କୁହାଯାଏ. ଆଣ୍ଡ ରେଡିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲନା ରେଡିୟସ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଦିଟା ବୋନ୍ ଥାଏ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଉପରଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦିଟା. ଦେନ୍ କାର୍ପେଲ ମେଟାକାର୍ପେଲ ଦେନ୍ ଫେଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା. এটা ହେଲା ମେଟାକାର୍ପେଲ এটা ହେଲା କାର୍ପେଲ୍ସ. ଗୋଡ଼ରେ ଏଟା ହେଲା ଫିମର ଫିବୁଲା एंड टिबिया. ସେ ଗୋଡ଼ରେ ବି ତଳ ପାଟର ଦିଟା ଅଛି ଫିବୁଲା ଟିବିଆ. ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଫିମର ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି. ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଯଦି ଖାଲି କୁହାଯିବ କୋଉଟା କହିଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି କୋଉଟା ହବ କହିଲ anyone? Jawbone. Femur bone. ନା ନା Jawbone, sir. Tibia. ନା ଏନାମେଲ ଦାନ୍ତରେ ଟିଥ୍ ନୁହଁ ଦାନ୍ତରେ Enamel. ଖାଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ କହିବ ଯଦି କହିବ ସେ କହିବ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେଇଟା ହବ ଫିମର. Femur. एनामल टा सर दांत जो ऊपर जोटा था से पार्ट टा को एनामल कहू. हां हां सेही हार्ड सब्सटेंस. ए दांतरे एटी जो ए सॉरी दांत कानरे देखो एटा स्टेप्स अछि एटा ला स्मॉलेस्ट बोन मेलियस इनकस स्टेप्स तीनटा अछि हम कान भितरे स्टेप्स हाला स्मॉलेस्ट bone in human body. Then control and coordination basically nervous system. रिसेप्टर माने कोन जोटे कि टच करी हमरो ब्रेन हला रिसेप्टर नु कि हमें टच कलु हाथ टच कलु सी इनफॉरमेशन पाई जाउची. ब्रेन टा रिसेप्टर माने इन द सेंस कोन हमें एठी छुइला को ब्रेन इनफॉरमेशन पाई जाउची चाहे गरम हो ठंडा हो. तो किछि फोनो रिसेप्टर जोटा कि साउंड रु हियरिंग बैलेंस ये बेस पर किछि फोटो माने देखि कि तुमे तुमर एक्टिविटी चलेबो विजुअल स्टिमुलस किछि थर्मो माने टेम्परेचर स्किन किछि ऑल्फैक्टरी माने नाक सुंगी की एंड किछि गैस्ट्रो टेस्ट करी की. these are all type of basically receptor तुमे पाइबो.
बेसिकली रिसेप्टर कौन ना सेंस ऑर्गन फेनो रिसेप्टर फंक्शन ऑफ हियरिंग बैलेंस ऑफ बॉडी फोटो है तुम आईज विजुअल स्टिमुलस थर्मल स्किन टच पेन olfactory नोज है स्मेल डिटेक्शन गैस्ट्रो है तुम टेस्ट डिटेक्शन so control and coordination basically गोटे है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम आज देखिबा तो नर्वस सिस्टम बेसिकली कौन ना मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ये टोटल तुम्हारा बॉडी को कंट्रोल करे एंड कोऑर्डिनेट करे जेमती सीपीयू कंप्यूटर है ये सेमती काम करे ये इंफॉर्मेशन रिसीव करे वेरियस बॉडी को इंफॉर्मेशन पठाए एक्ट करे अकॉर्डिंगली मसल को से भलिया काम करिया को जो छुई देला गरम लागला मसल को कहबा हाथ को टाणिया न्यूरॉन कोन ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा हला न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट cell of longest animal cell basically animal या human animal रो longest cell neuron shortest cell हला कोन या smallest cell कोन sperm largest cell हला कोन ovum getting so ये so neuron is a highly specialized cell is responsible for transportation of nerve impulse nerve impulse को transmission करिया पई यही हेल्प करे साइटन एक्सन माइलिन सी थी जोडे की तार पार्ट एथरो न्यूक्लियस गोटे सेल सेल थिबो माने तार सब जिंस थिबो न्यूक्लियस वगैरह सो एक्सन डेंड्राइट ये सब साइटन ये सब बेसिकली यार पार्ट साइटन बेसिकली जो स्टार शेप देखो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर बात तार लास्ट पार्ट एटा को डेंड्राइट कह जाय एक्शन थ्रू रे से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करे गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट लॉन्ग ए बळे टच जो सेल सहित ए बळे टच करी अछि मस्कुलर फाइबर सहित एक्शन रो आसिला ये एटी डेंड्राइट बळे अछि या कैपिलरी सहित टच हि गला इंफॉर्मेशन नै कि गला ए बळे देखि आउट के जदी भलो देखि ए बळे इंफॉर्मेशन नै the types of neuron गोटे सेंसरी न्यूरॉन आ गोटे मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन माने जे सेंस ऑर्गन थ्रू रे है ना और मोटर न्यूरॉन माने कोन ये मसल और ग्लैंड न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू मसल एंड ग्लैंड सेंसर न्यूरॉन हला कोन रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन आ किछि अछि रिले न्यूरॉन रिले माने कोन इंफॉर्मेशन देला एक्शन करला न्यूरॉन रिले सिग्नल बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन ये बेसिकली तीन टाइप रो मेजर न्यूरॉन पाइबो ये बढिया तुमर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये देखो ऑटोमेटिक तुमरो आखी को जदी मोटे फिंगी भी किछि से आखी बंद हे जिवो से सेंस कला कि खतरा आसी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन सीटा को कहा जाए देखो ये इंफॉर्मेशन गला मुंडरे पसेला फिर पुनी रिले कर देला देखो एटा काम कर ये रिले करला मोटर न्यूरॉन कला टाण मसल को ए मसल को कहे तो टाणिया हाथरा टाणिया टाणिया ब्रेन रो मेसेज आसले एठी ब्रेन मेसेज जो स्पाइनल कॉर्ड जो सीएनएस मेसेज आसला पर एठी कहले जो हाथ टाण ये कहले ओके मोटर न्यूरॉन टाण गला कोठी सेंसरी न्यूरॉन दीटा साइमल्टेनियसली काम करत सेटा करी और रिले न्यूरॉन कोठी जानलो तो एटा ला रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन एठी पास कर दो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व so nerve impulse are travel following the manner कोना ना डेंड्राइट रू सेल बॉडी को आसला एटा देखि दियो कोंटा केमिति नर्व ट्रांसपोर्ट हुए थोड़ा एटा एटा ला डेंड्राइट इ टच कि थाई डेंड्राइट रे मु जेमति एटी देखैली तुमको टच कि नै डेंड्राइट so डेंड्राइट रू सेल बॉडी एटा सॉरी सेल बॉडी हला एटा सेल बॉडी रू एक्शन इ बडा ट्रांसमिट हो cell body reaction and nerve ending at the tip of the action then snipage and dendrite of the next action सहित कनेक्ट होला एबडा सब कनेक्ट हे जाई गोटी एटा देखिली केवल तापर सेई बडा सब कनेक्ट so chemical release from action tip of one neuron cross the snipage or neuromuscular junction to reach the next cell so human nervous system basically
तीनटा मेन पार्ट गोटे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जोटा कि ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड अच्छा ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स to relay the channel of signal between brain and peripheral nervous system so गोटे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गोटे पेरिफेराल नर्वस सिस्टम पेरिफेराल माने हमर आउट बाहर पार्ट माने सेंट्रल नर्व ब्रेन आउ स्पाइनल को छाड़ देला पर आउ जो बाहर so these are 12 pairs of cranial nerves the cranial nerves came out of the brain and go to the came out of the brain go to the brains to the head organ head region there are 31 pair of spinal nerve the spinal nerve came out of the spinal cord and go to the organ which below the head region peripheral pore sympathetic this part of autonomous nervous system heighten the activity organ as per the need for example during the running there is an increase in demand of oxygen by the body दरकार यानी जते दौड़ियो माने बॉडी रो सेल को ऑक्सीजन दरकार this fulfilled by increase in breathing rate देखिनो हार्ट बीट बढ़ जाए नी so increase heart rate तो एटा हला sympathetic nervous system काम so sympathetic nervous system works to increase the breathing rate and the heart rate in this case similarly ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି parasympathetic sympathetic parasympathetic ଗୋଟିଏ ମାନେ parasympathetic nerve this part of autonomous nervous system slows down the activity of organ thus has a calming कौन करे तुम्हें शुईला बेले ऑटोमेटिक तुम ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाए तो ये कौन करे ये तुम नर्वस सिस्टम कहे देख ये दरकार ना तू बेसी टेंशन है ना एड सेड जीवा दरकार नहीं दौड़ा दौड़ी ना चुपचाप तो शोची कहीं स्लो कर दे आम एत खटू कहीं इट कैन बी सेड दैट पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन कंजर्विंग द एनर्जी कहले एनर्जी बंचा ना जेतले आमे सोचू इलेक्ट्रिक लाइट फाइट सब बंद करी सुनो एनर्जी बचाऊ so human nervous system basically ita structure tar देखियो से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गोटे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रे दी प्रकार गोटे ऑटोनोमस माने ऑटोमेटिकली ये फंक्शन करूची गोटे सिंपैथेटिक गोटे पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे गोटे क्रैनियम नर्व्स गोटे स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड अलगा देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन हला फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन बर्तन देखिया कोन ना ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा फर्स्ट फ्रंट साइड रो देखिबा एटा हला फोर ब्रेन देन एई पार्ट हला मिड ब्रेन देन पछो पार्ट हला हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन बेसिकली cerebrum very important part hypothalamus pituitary gland ये फोर ब्रेन रो पार्ट मिड ब्रेन बेसिकली सॉरी hypothalamus रहइबो मिड ब्रेन रे so part of human brain देखियो four brain composed of cerebrum mid brain composed of hypothalamus and hind brain composed of cerebellum bones veroli कहा जाय या medulla oblongata ये गोटे गोटे फंक्शन जानि दो देले समय हियो largest part of human brain हला cerebrum ये दुईटा हेमिस्फीयर गोटे हला cerebral hemisphere two hemisphere called cerebral hemisphere cerebrum control the voluntary motor action it is the site of sensory perception like tactile auditory perception it is seat of the learning and memory कोने cerebrum हेले तो memory बढ़ जी hypothalamus कोउडी अछि मिड ब्रेन base of the cerebrum by it control the sleep and wake cycle circadian rhythm of the body को control एटा very important circadian rhythm कोन कहयो circadian rhythm कोन biological clock माने जोटा कि बायोलॉजी तुमरो बॉडी रो क्लॉक गोटे सेट हो जाए तुम केतले सुइबो सेही समय निद आसीबो केतले जागिबो सेही समय तुम निद भांगी जीवो केतले भूख लागिबो ये सब गोटे बॉडी तार गोटे साइकिल बने दै थाए तो सेटा को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाए जेतले फ्लाइट रो हमें जाऊ नॉर्मली हम स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्बेंस हो जाए जोटा कि तुम वेस्टर्न वर्ल्ड को गतले गलो
या इंडिया रो बहुत दूर को गलो तुमरो टाइम जोन चेंज जाए जेमिति आमे धरो दिन 12टा बेलू बाहरले यूएसए पहुंचलू 12टा राति 12टा को पहुंचिया कथा हम इंडियन टाइम अनुसार बट यूएसए रो सेते बेले दिन 12टा हिथिबो तुमरा संध्या हेले तुमको निद लागे राति 12टा बट तुमे ऑलरेडी 12 घंटा प्लस सकाळ 6टा रे उठिलनी 6 घंटा 18 घंटा जागी गलनी तुमर तले बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हे गला तो ସେଇଟା କୁ जो इम्पैक्ट को ये करिया पई देखिबो क्रिकेटर माने आगुआ जाई पळै जांती सेटा को जेट लैग कहा जाए जेट लैग कहा जाए जोटा कि तापय मेडिसिन भी खाती ताको एडजस्ट करिया पई बॉडी सही एनवायरनमेंट के समय लागे इट आल्सो कंट्रोल द अर्जेस द ईटिंग ऑफ ड्रिंकिंग खाइबा और ड्रिंक पीवा पीवा माने दारू नुह ये सबको हेल्प करे देन सेरिबेलम ये कोठी अछि हैंड ब्रेन cerebellum pons and medulla ये तीनटा हैंड ब्रेन अछि cerebellum lies between cerebrum and the back of the whole structure it coordinates the motor function when you are riding your cycle या bicycle the perfect coordination between your pedaling and steering control is achieved by cerebellum जार cerebellum ठीक नहीं है साइकिल चढ़ी परिबो नहीं बाइक चली परिबो नहीं it controls the posture and balance body of posture and balance we control करे it controls the precision of voluntary action precision माने proper काम जेमती करिया प्रॉपर लिखिबा प्रॉपर गोटे जिंस करूच या काको फिंगिल जेमती विकेट की रविंद्र जाडेजा विकेट को मारे फिंगे माने बॉल जाई की बाज जाए डायरेक्टली प्रिसिशन अछि तार ये सेरिबेलम कंट्रोल करे the medulla forms of brain stem and along with the bones it lies at the base of the brain spinal cord पर्यंत कंट्रोल so medulla control various involuntary function involuntary माने कोन जोंटे तुमर कंट्रोल नाही लाइक हियर बीट रेस्पिरेशन हार्ट बीट सॉरी এটা हार्ट बीट रेस्पिरेशन ये सब इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी जोंटे कि ब्लड प्रेशर हो सेलिवेशन हो वोमिटिंग हो ऑटोमेटिक so vomit देखि से पढिथिले हमें then pons it relays impulses between lower cerebellum and spinal cord and higher part of brain like cerebellum midbrain and it also regulate respiration मध्ये regulate so यार समस्त फंक्शन मेडुला पॉन्स सेरिबेलम हाइपोथैलेमस एवं सेरिब्रम ये समस्त फंक्शन तुम मैंने मन रखी देथिबो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट these functions are very important to you spinal cord controls the reflex action and conducts the message between the different part of the body to brain माने via media spinal cord हला जेमती मीडिएटर भलिया काम करे झियो घरु कथाडा नबो पुओ घरु पठेबो पुओ घरु कथाडा नबो झियो घरु पठेबो एठी एठी कोन करे एठी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन रु नबो बॉडी को पठेबो बॉडी रु नबो ब्रेन को पठेबो और रिफ्लेक्स एक्शन जानि तो एटा इनवॉल्यूंटरी एक्शन जी को ऑटोमेटिक चली जाए गरम जिनस छुइलो ठंडा जिनस छुइलो ऑटोमेटिक एक्शन हो जाए आखि ऑटोमेटिक बंद हो जिवो जतरे किसी आसी गला एटा को रिफ्लेक्स एक्शन तो रिफ्लेक्स आर्क जोंटे कि एटा टच कले रिसेप्टर सेंसर न्यूरॉन रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन देन इफेक्टर काम कला मसल जने देखि दे ये सब गोटे साइकिल अछि मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल केमति होछि साइकिल अछि जोटा कि कोहाइ से किछि एग्जाम रिलेटेड किछि नै सो नेक्स्ट देखियो एंडोक्राइन सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन सिस्टम ये गोटे ग्लैंड जो थिरे डक्ट नाही माने जेमिति पानी रहिया पई गोटे बोतल दरकार है ना बोतल रे पानी रखुच कि पतला माने बर्तन रे किछि पानी रखुच बट कपड़ा रे भी पानी रहउछि ना नहीं कपड़ा एतरे सुखौच या कपड़ा एतरे उदा भी करूच सेइथरे पानी रहउछि ना नहीं कपड़ा रे किछि डक्ट नाही
बट स्टिल जेन पानी रोची ये इवन गोटे बाउल भलिया पानी भी रही जाउची है ना तो कौन पाई कपड़ा मानि जो डक्टलेस ग्लैंड सेटा को एंडोक्राइन ग्लैंड बट बालीटी हो किंबा गोटे थली हो किंबा गोटे पॉलिथिन हो सेटा ले एक्सोक्राइन ग्लैंड जोंथरे ग्लैंड अछि ता भीतर स्टोर हेक रहउची तो एंडोक्राइन ग्लैंड कोन कना सीक्रेट्स इज प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम hormones are produced in the endocrine gland and the hormones are mainly composed of protein so hormone assists nervous system in control and coordination so nerves do not react to every nook and corner of the body and hence hormones are needed to affect the control and coordination of this part moreover unlike nervous control hormonal control is somewhat slower nervous fast process हुए so endocrine exocrine बुझिएलो hormone is basically chemical messenger गुटा और ये all hormones are consist of protein basically Toxins gland to say so they act as a target tissue organ endocrine system helps in control and coordination through chemical composition called hormone so what are the endocrine glands male female देखो so ये ला male and ये ला female एंडोक्राइन ग्लैंड जोटा कि तुम ब्रेन रू हाइपोथैलेमस हो पिट्यूटरी ग्लैंड हो पिनियल ग्लैंड हो थायराइड ग्लैंड जानिथिबो पाराथाइड ता तळको ग्लैंड अछि थाइमस ग्लैंड एंड पानक्रियास ता कहितली बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड तुमरो लिवर हला कोन ना एक्सोक्राइन ग्लैंड टेस्टिस हो मेल रे फीमेल रे ओवरी आउ एठी एड्रिनल ग्लैंड कोन ना किडनी रो ऊपर पार्ट रे किडनी रो ऊपर पार्ट रे एड्रिनल ग्लैंड किडनी फंक्शन करे पे हेल्प करे आउ अलगा फंक्शन अछि तार बाकी सब समान अछि खाली मेल फीमेल गोटे प्रॉब्लम है गोटे फरक है ओवरी एंड टेस्टिस so endocrine gland तार लोकेशन तार हार्मोन तार फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड also known as master gland कहा जाए ये कोठी अछि at the base of the brain हार्मोन प्रोड्यूस कोन करे ना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल केस रो एटा थाए ये प्रोड्यूस करे फंक्शन कोन ना ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ब्रेन पाखे रहउछ ना सेते पे मास्टर ग्लैंड कहउछन हाँ पिट्यूटरी हाँ ग्लैंड एग्जैक्टली खाली से ब्रेन रे रहउची आ ये बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन भी रोल प्ले करूची कहना बॉडी रो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इवन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड फंक्शन को भी ये करउची एज वेल एज तुमरो फीमेल रे जो तुमरो ओव्युलेशन वगैरह होउची पीरियोडिक साइकिल जो होउची सेइथरे भी ये हेल्प करूची पीरियोडिक साइकिल जो ओव्युलेशन हुए सेही समय रे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच टीएसएच भी मन रखियो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफिस रे कोन करची ऑप्शन रे डायरेक्ट लिख दियो टीएसएच अरे भाई टीएसएच सब पिला कोन जानि परिबे डायरेक्ट एफएसएच लिख दियो सेही समय रे कोन करिवो तो एटा मन रखियो पड़ियो ठीक देन थायराइड ग्लैंड जो नाक नेक रो अछि थायरोक्सिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करे एंड कंट्रोल्स जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी एड्रिनल ग्लैंड अबव द किडनी पाइबो एटा पई मोटा हे जानती जो कोन दे हाँ थायराइड हाँ हाँ ले जो थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म भोक लागिवनी थायराइड ग्लैंड मोटा पतला हाँ हाँ मोटा पतला हो जाए जल्दी आ तुमे थायराइड ग्लैंड रु थायरोक्सिन जदी तार जहार कम थिबो थायराइड थायराइड गोटे थाए ये थायरोक्सिन रु थायराइड गोटे हार्मोन थाए जहार अधिका थायराइड थाए थायराइड जीव जहार थिबो तार ग्रोथ एमिति हुए कि कहा किए मोटा हो जाए देखियो किए पतला हो जाइथिबो एबे बहुत सारा थायराइड होउची यांकर देखछन नहीं वुमेन मन को मो मदन कर भी अछि हाँ से हाँ हाँ माने एग्जैक्टली देवा तक खुली छै सर देन एड्रिनल ग्लैंड जस्ट किडनी ऊपर अछि मु देखैथिली एठी देखो किडनी ऊपर ये एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट करंती it prepare the body for emergency situation and hence एटा को कहती fight and flight hormone कौन emergency situation कौन ना धरा गोटे लड़ाई झगड़ा होउथु है ना तुमको सी कौन करिवो सिचुएशन अनुसार तुम जदी माने ये तो हेल्प करे माइंड भी हेल्प करे बट ये कौन करे लड़ाई भी करे देबो आ ठंडा भी करे देबो
है ना माने लड़ाई करिवे त एई समय तुम धर तुमको के अटैक करू ये हार्मोन तुमको कौन करिवो ओके तू भी ताले अटैक कर काहे ना तते निजको प्रोटेक्ट करियार अछि है ना आउ केते कहबे देखियो भाई तुमे से लोकटा बहुत अधिका तुमटू माने ये अछि शक्तिशाली अछि सेही समय तुमे कोन कर भाई चुप रहि जा बरो माडे गुटे खाइया चुप रहि जा एठी बेसी मुंडो खेला है ना फाइट एंड फ्लाइट लड़ाई भी कर दबो केते फ्लाइट माने भागी पड़ी जिवो चुपचाप साइलेंट रहि देन पानक्रिया जानी तो इंसुलिन सिक्रेट करे कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल टेस्टिस मेल रे पाइबो इन स्क्रोटम थाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग द puberty देन फीमेल नियर यूटेरस रो पाइबो एस्ट्रोजन थाई एग प्रोडक्शन पई हेल्प करे डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग puberty ऑफ द फीमेल सो ये किछि हार्मोन्स जोटा कि तुमे काम रे आसी the iodine salt is necessary because iodine material mineral is essential part of thyronine hormone. So it is important that we must consume iodized salt. Is in turn it is essential for thyroid gland ପାଇଁ हाँ thyroid हाँ gland ପାଇଁ iodized exactly salt exactly हाँ. ମାନେ thyroid gland It also control carbohydrate, protein, and fat metabolism for the best balance of the growth deficiency of iodine. Might cause disease goiter. ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ iodine ଅଭାବ ହେଲେ goiter. Diabetes is due to deficient insulin hormone secreted by the pancreas that is responsible for lower or control the blood sugar. So यदि insulin production यदि कम हो deficiency रहबे insulin और ब्लड सुगर लेवल यदि बहुत अधिका तुम हो जाइथिबो इंसुलिन जति को प्रोड्यूस करते करूची बट तुम अधिका सुगरी खाद्य खाउछो ताले सही समय डायबिटीज हो पेशेंट्स have internally administered कोन करंती ना इंसुलिन नियंती जो मान को डायबिटीज थाए देखिथिबो इंसुलिन नै था बाहर ब्लड सुगर लेवल कंट्रोल करिया पे एटा तो कहि देइथिली फाइट एंड फ्लाइट जेते तुम रागी जाओ लड़ाई करो तुम हार्ट बीट फास्टर हो जानी एड्रेनालिन ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन कथा कहू ये प्लांट हार्मोन्स sir adrenal gland ଟା ଆମର ମାନେ ଇଏଟାକୁ control करे eagerness aggressiveness ଟାକୁ हाँ 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 सेटा को कंट्रोल करे सेटा फाइट एंड फ्लाइट इमोशन और aggressiveness ଟାକୁ adrenal gland through रे control करी कंट्रोल करे देन किछि प्लांट हार्मोन जोटा कि क्वेश्चन आसीथिला मु सेति मध्ये करे दउची प्लांट हार्मोन आर केमिकल व्हिच हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन सबुथिरे दरकार तो टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन काना मेन हार्मोन गुडा ऑक्सिन जोटा कि फंक्शन हला ग्रोथ पई हेल्प करे देन फोटोट्रोपिज्म more growth in the cell toward the light जोटा कि ये हार्मोन कहार थाई कलो सनफ्लावर सूर्यमुखी तेल सूर्यमुखी फूल बुझे तो सिमिलरली जिबरलिन ये हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम ग्रोथ होबा पई ये हेल्प करे साइटोकाइनिन बेसिकली सेल डिवीजन पई हेल्प करे एवं एफसीसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ कॉजिंग विल्टिंग ऑफ द लीव्स माने स्ट्रेस हार्मोन याकू कहा जाय जोटा कि तुमरो डेसिडुअस प्लांट वगैरह तुम देखिथिबो ये सब रे एफसीसिक एसिड थाए आउ गोटे पड़े गला और नाही रे आउ गोटे है तुमरो इथाइलिन ऑक्सिन टा कौन करे ये हला ग्रोथ करे ग्रोथ ये हेल्प करे एवं एज वेल एज शूट टिप को सिंथेसाइज करे शूट टिप माने बुझले रूट एंड शूट टिप माने सर शूट टा माने कोन शूट रो ऊपर पार्ट स्टेम रो ऊपरटा स्टेम मुरे छोटो ऊपर को थाए
माने जोटा कि तुम गछ जो बढ़ुव तार ऊपर पार्टा जो बेसिकली हाँ से स्टेम रो ऊपर पार्टा कहि परिबो तार माने सूट रो मेन पार्ट ताको चेंजेस हुए नी जेतरे प्लांट ग्रोथ हुए देखिबो तार गछ रो ऊपर पार्टा धीरे धीरे चेंजेस हो जाय नी सेटा ऑक्सीजन जुगु है प्लांट हार्मोन और ह्यूमन हार्मोन सब डिफरेंट ना ऑक्सिन जो गिबरलिन हाँ 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 शुण साइटोकिन्स क्वेश्चन एमती भी आसी पारे एगुड़ाक सब कि व्हिच आर द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन और व्हिच आर द फॉलोइंग एनिमल हार्मोन ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाइबो सब प्लांट हार्मोन इज डिफरेंट एनिमल हार्मोन इज डिफरेंट ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ଏଠି ହରମୋନ ଦେଇନି ଯୋଉଟା କି ଇଥାଇଲିନ ଇଥାଇଲିନ ମାନେ କଣ କହିଲ ଯୋଉଟା କି ରାଇପେନିଂ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ ରେ ହେଲ୍ପ करे ରାଇପେନିଂ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ ରେ ଇଏ ହେଲ୍ପ करे ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି ଟ୍ରପିଜିମ୍ ନାସ୍ଟିଜିମ୍ ଏତେ लिमिटेड ଇଏର ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଇଥାଇଲିନ କଣ ଦିଆ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସରିଲା ଫିମେଲ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ मेल ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुए जानिଛ ना नहीं এটা बेसिकली कौन से ओनली वन पेरेंट्स थाए ସେଥିର मेल फीमेल दरकार नहीं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोटा कि सेक्सुअल मेथड रे हुए ना सेटा को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमिति एनिमल रे भी हुए सेटा प्लांट रे भी हुए जेमिति तुमरो एनिमल रो सेल नहीं की भी जण ये माने जन्म क्लोनिंग वगैरह होनी ये मेथड है सो asexual reproduction generally occur during favorable environmental condition and when there is an abundance of food the faster method of reproduction asexual तो किसी फ्यूजन मेथड हो बॉडिंग हो स्पर्म फॉर्मेशन तुम्हें ये देखिथिबे एगुडा सब एग्जांपल में देखो फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन एगुडा सब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए एगुडा सब पत्र रो बाहरी जाए पत्र पत्र यंग प्लांट बाहरी जाए तुम्हें बही भीतर रखि देथिबो सब चेर रू बाहरी जाए न्यू सूट बाहरी गला न्यू सूट बाहरला जोडे ए जो एटा हला ऊपर चेर रो ऊपर पार्ट हला सूट तो सूट न्यू जो मॉडिफाई हुए ऑक्सीजन ताको हेल्प करे एगुडा या ग्रोथ हवा पे ऑक्सीजन हेल्प करे पोटैटो हो ये सब यंग प्लांट जो जनरेट हुए बर्ड्स रू देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो वन बाय वन देखि दवा ह्यूमन बीइंग जोटा कि सेक्सुअल मेल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन बेसिकली मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवा स्पर्म हैव टेल एंड देयरफॉर ये मोटाइल ये मूवमेंट करे and they are produced in large number in the testes ovum is bigger and non motile only one ovary produced one ovum in 1 month so during जो menstrual cycle ovulation हुए mid phase रे ये ovulation रे basically 14 days रे basically हुए जदी exact हुए यही समय रे basically produce हुए कौन ना ovum only one ovum by one ovary but ovary दीटा अछि there is no food stored in the sperm whereas ova contain stored food both gametes are microscopic that unicellular এটা बहुत important and have a half the number of chromosome as compared to body cell रे तुम्हारो full पाइबो क्रोमोसोम माने 23 पेयर पाइबो बट स्पर्म रे 20 ये तुम्हारो 23 रहिबो पेयर रहिबो ଆଉ ଓଭମ ରେ 23 ତ ସେଟା ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବ ସେଇ ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଟୋଟାଲ 46 ହେଇଯିବ दैट इज 23 पेयर ହେଇଯାଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ human being become reproductively active from onset of poverty माने जोंटा कि टीन एज आसे जोंटा कह जाए poverty is a period of adolescence जेतले अचीव करो मेल पई बेसिकली 11 to 13 और फीमेल पई टिके आगरु हो जाए
Poverty is associated with many physical, mental, emotional, physiological, psychological, boys girls सब किसी develop हुए देखिथिबो समस्ते केमिति जଣା पड़े सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जोटा कि बॉडी रो ग्रोथ बॉडी रो हेयर ये सब तुमरो थाई वगैरह ये सब डेवलप हो जाए हिप्स एरिया ये सब चेंजेस हो जाए स्किन कलर ये सब जिनस धीरे धीरे आसी जाए so male reproductive system ala male reproductive consists of following component pair of testes the system of ducts so has different urethra and some gland seminal vesicle prostate gland Cowper's gland ये सब धीरे धीरे ये मेल गेमेट प्रोड्यूस करे या विषय बेसी କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ এই जो फास्ट डिफरेंस है वेरी इंपोर्टेंट ଯେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ फास्ट डिफरेंस ଟା ଖାଲି କହି ଦଉଛି ये फास्ट डिफरेंस टा एठी देखियो एटा सो ये हला टेस्टिस रु स्पर्म जाय এই যে এটা যদি কাটি দিয়া ଯିବ তাহলে স্পর্ম আউ আসিবনি কম আউট আসিবনি বাহার কো আসিবনি যদি স্পর্ম ন আসিলা তা মানে কোন পিলা হবনি तो ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କି ଆଚ୍ଛା ପତି ଯୋଉ कहलाए ସେଇଟାକୁ କଣ ଏଡ୍ ଚାଲୁ ଥାଏ ଯୋଉଠି କି ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ସେଟାକୁ ଏଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ତ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଏଗୁଡା ବି କରା ହଉଥିଲା ଫିମେଲ ର ବି କରା ହଉଥିଲା କଣ ନା ଏଇ ପର୍ସନ ଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଥାନ୍ତି ଓଭମ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ ହେଇକି ଆସୁନଥାଏ ଏଇ ପର୍ସନ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଓଭମ ଆସୁନଥାଏ मेल गैमेट जेमती स्पर्म फीमेल गैमेट सेमती ओभारी पेयर ऑफ ओभारी थाए ए पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट थाए यूट्रस जोटे वुम्ब को आजे एंड वेजिना जोटे की बर्थ कैनाल थाए तो ईच ओवरी इज जोटे की शेप वगैरह सब जानि छ release of ovum from every from the ovary into the abdominal cavity is known as ovulation so function of ovary kon it produce and release ovum to produce female reproductive hormone that is estrogen and progesterone there are two fallopian tubes the end lying close to the ovary has a finger like structure called fimbrium the two fallopian tubes unite to form an elastic bag like structure called uterus ଏଇଟା ଇଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ହଉଛି କି ରେ ये देखो फेलोपियन ट्यूब रो आसिला एटा फेलोपियन ट्यूब रो आसिला एटा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर एटा लग यूटेरस को जाय एटी एक्चुअली पिलर हुए जाइगोट फॉर्मेशन हुए এই জায়গায় জাইগোট फॉर्मेशन হেলা পরে পিলা এটি ইমপ্লান্টেশন हुए सब फेलोपियन ट्यूब रे कोन हुए ट्यूब रे बेसिकली फर्टिलाइजेशन माने स्पर्म आउ ओवम फ्यूज हो जाती स्पर्म आसिला ओवम आसिला ये फ्यूज हेगी गोटे फॉर्मेशन हो जाती कोन ना जाइगोट फॉर्मेशन हेले देन ए जाइगोट बेसिकली अर्ली एम्ब्रायो कहा जाए एठू फेर पुनी सेल डिवीजन हबो ये सब सेल डिवीजन हबो सेल डिवीजन हेला परे जाकी यूटेरस रहिबो सेल डिवीजन हला embryo formed in fallopian tube comes down and gets attached to endometrium that is implantation कहा जाए endometrium कोठी ना जो यूटेरस रो अपर पार्ट टा develops for the next 9 months till the baby delivery तापरे भाजिना थ्रो रे बेबी बाहर को आसी ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ so menstruation it is the loss of blood or mucus along with fertilization of ovum and the rupture of cell and tissues of the endometrium जो एंडोमेट्रियम कथा कहली भाजिनार सॉरी एंडोमेट्रियम यूटेरस रो कहली जो थिरे पिला रुए सब मास एवरी
मंथ रे जो साइकिल हुए 28 डे साइकिल से भले सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि स्पर्म आसीबो ओभम आसीबो पिला रहिबो तो ये एवरी मंथ रे तार फंक्शन थाए जदि पिला न आसे जो एंडोमेट्रियम थाए सी रप्चर हो जाए ब्रेक हो जाए सब ब्लड बॉडी रु बाहर को आसे तो यही साइकिल जिते बड़े तुम देखिबो जिते बड़े स्पर्म गला सेही पर्टिकुलर समय रे ओव्युलेशन समय रे स्पर्म गला जाइगोट फॉर्मेशन हे गला ता माने आउ तुमरो पीरियडिक साइकिल हबो नहीं बंद हो so it is 20-day cycle which occurs every productively active female जोटा कि 45 एज पर्यंत थाए प्लस और माइनस 5 भी थाए the flow of blood continues 2 to 8 days if the ovum does not get fertilized जदि माने sperm आसिलानी माने fertilize होबनी then the endometrium start slowing off that is एटा भांगी जाए and there is a loss of blood and mucus तो भाजी ना ये okay so in case the ovum gets fertilized then the endometrium becomes more sticky हो जाए thick हो जाए and spongy हो जाए जोटा कि पिला को रखिया पाई ଗୋଟେ माहौल क्रिएट कर दिए and menstruation तापरे हुए नहीं जोटा कि कहथिले beginning of menstruation को कहा जाए puberty जोटा कि menarche कहा जाए and stoppage हला को menopause कहा जाए 45 to 55 years age इस menopause कहा so STD वगैरह हुए reproductive sexually transmitted disease and birth control a number of disease occurs as a result of sexual intercourse if one of the parents is infected there is known as sexual STD transmitted disease they can be caused by bacteria for example syphilis gonorrhea or caused by virus or for example HIV AIDS the transmission of these disease can be avoided by using birth control measures such as wearing of condom during the sexual ये जगह बेबी डेवलप हुए बेसिकली so hereditary and evolution Mendel experiment जोटा कि sex determination so Mendel referred the transmission of character from parents to offspring an inherited traits is particular genetically determined feature that distinguish a person from other example ये सब होला so inheritance ର ମୂଳ character କଣ DNA father of genetics କାହା କୁହାଯାଏ Mendel ସେ experiment କରିଥିଲେ କଣ ନା garden peach pisum sativum ରେ so chromosome are long thread-like structure present in the nucleus of cell which contain hereditary information of the cell in the form of gene. DNA is a chemical in the chromosome which carries the trait in a coded form. Gene is a part of chromosome which controls specific biological function. ये सब होते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट विषय अच्छी था सेक्स डिटरमिनेंट जानी थो मेल सब बड़े एक्स वाई थांती और फीमेल हला एक्स एक्स तो स्पर्म आसिला माने एक्स आसी पारे स्पर्म सहित या वाई आसी पारे बट फीमेल पाखरु ऑलवेज एक्स आसीबो सो जदी वाई आसिला फीमेल पाखरु एक्स तो आसीबो आसीबो तो एक्स वाई माने मेल हबो आउ एठु जदी एक्स तो आसीबो आसीबो आउ एठु जदी एक्स आसीगला ताले फीमेल हबो तो 50% चांसेस जी मेल हबार और फीमेल हबार बट देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल responsibility kahar अछि male ro but male ro भी responsibility male cannot decide so sex chromosome basically xy थाए one pair ଆଉ autosome हला 22 pair one pair हला जोंटा कि xy या xx एटा हला sex chromosome ओके इवोल्यूशन चार्ट डार्विन देते ଆଉ କିଛି ଆଉ एते देखिबानी आज पे एति थाउ जेनेटिक पॉइंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक
ସାର୍ ସେଇ ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଦେବେ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ କ'ଣଟା ରହିଲା କ'ଣ ତୁମର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ କାଲି ନେଇଯିବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ବାଏ ଗାଇସ୍ ଟେକ୍ କେୟାର